Hello everyone, today we are going to start the poem My Shadow. It is written by R.L. Stevenson. Let us read the poem and understand the concept. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. सो यहाँ पे जो पोइट है ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज शेडो कि उनकी शेडो है दैट इट कम्स एंड गोस, वो आती है उस और चली जाती है एंड व्हाट ही कैन सी, वो जितना देख पाता है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, वो उससे कहीं ज़्यादा उसका यूजेस है शेडो के उसके। एंड वो ही वॉज सेइंग दैट वो हिल्स टू हेड मीन्स पैर से लेके सर तक सिर्फ उसके जैसे सेम एग्जैक्ट सेम दिखती है। इट्स लाइक आवर शेडो, इट्स लाइक सेम लाइक अस, सो इट लुक लाइक द सेम। एंड व्हेन ही जंप्स ऑन टू द बेड, जब वो बेड पे सोने के लिए जाता है, हिज शेडो जंप इनटू द बेड बिफोर हिम, उसकी शेडो जो है वो उससे पहले ही बेड पे सो जाती है। The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets up little that there is none of him at all. And the funniest thing, this is the funniest thing, is that how he likes to grow, कि वो grow कैसे करता है, because he does not grow like a proper children. वो proper children के जैसे grow नहीं होता, जब slowly we grow like slowly ना, मेरी height हमारी age सब slow बढ़ती है, but he was not like a proper children जैसे grow करते हैं। He just sometimes grow very tall like India rubber ball, कि हम जितना उसको tall कर सकते हैं वो उतनी tall हो सकता है, like tall like a India rubber ball, and sometimes it gets so little, वो इतना छोटा हो जाता है कि हमें किसी को भी वो दिखाई भी देता, दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, कि उसके जैसा वहाँ पे कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। He hasn't got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close besides me, he is a coward you can see. I would think shame to stick to nurse as that shadow sticks to me. नोशन का मीन्स होता है आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं कि कैसे चिल्ड्रन को खेलना चाहिए। ऑट मतलब बेस्ट थिंग टू, जो करेक्ट वे होता है वो, ठीक है। तो ही हैज़ नो आइडिया कि कैसे जो है चिल्ड्रन को खेलना चाहिए। एंड ही ऑलवेज मेक अ फुल ऑफ द पोएट, वो हमेशा पोएट का फुल बना देता है बिकॉज उसको खेलना नहीं आता है। एंड ही ऑलवेज स्टेज क्लोज टू द पोएट, हमेशा पोएट के पास रहता है। पोएट को क्या लगता है कि ही इज़ अ कावर्ड, कि वो बिल्कुल कावर्ड है। कावर्ड मीन्स नॉट ब्रेव, जो डरपोक होते हैं, दैट इज़ कावर्ड। दैट ही वॉज सो कावर्ड कि वो हमेशा उसके साथ ही रहता है, कभी भी अलग नहीं होता। और उससे लगता है कि वो जैसे नर्सी होती है ना, नर्सी मीन्स नर्स और केयर टेकर से, कि वो शेडो जो है वो जैसे उसके साथ नर्सी टिकी हुई रहती है, वैसे शेडो उसके साथ हमेशा टिका हुआ रहता है, स्टिक करा हुआ रहता है। One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. One morning, it's very early when the sun was not up, means sun जो है वो आया नहीं था, sun didn't rises. He just the boy rose, वो उठ गया था, and he just see जब shining dew means थोड़ी सी जो रोशनी है वो, that everywhere is like some little shining, and he thought that his shadow was so lazy, उसका shadow जो है वो इतना lazy था that he was still sleeping, वो इतना sleepy head था, and he was errant sleepy head. एरेंट मीन्स द वर्स्ट काइंड ऑफ समथिंग, सो कि वो इतना ज़्यादा स्लीपी था दैट ही हैड स्टेड एट होम बिहाइंड, वो उसके पीछे से घर पे ही रुक गया, उसके साथ वॉक के लिए नहीं आया। और व्हेन ही शेडो वाज ऑन द बेड एंड फास्ट अस्लीप, और वो वहीं पे सो गया। हियर वी कंप्लीटेड आवर पोएम, लेट्स रीड अबाउट द पोएट। R.L. Stevenson was a Scottish writer who wrote poems and stories for both adults and children. Stevenson's poems are usually about the things that he saw around him every day. Treasure Island and Kidnapped are two popular adventure novels he wrote for the children.
So R.L. Stevenson was a Scottish writer. ये एक Scottish writer है, and he normally writes poems and stories for both adults and children. ये दोनों के लिए poems और stories लिखते हैं. His poems are usually based on the everyday life, जो everyday life में वो देखते हैं, that the things he saw. His poem was based on them. Treasure Islands and Kidnap. These two novels are very adventure novel of him, were very famous among the children. जो इन्होंने children के लिए लिखी थी, ये दोनों novels उनकी काफ़ी famous हैं. In this poem, Stevenson is talking about his shadow and all the things it does. The shadow follows the poet everywhere he goes and does all the things he does. Sometimes it grows big and sometimes it cannot be seen at all. The shadow is almost like a poet's twin. In this poem, he was talking about his shadow. वो उनकी shadow की बात कर रहे हैं कि what the things his shadow do. He follows everywhere. Poet everywhere. वो poet को हर जगह follow करती है. He goes everywhere the poet goes and does all the things. वो सारी जगह जाती है उनके साथ. वो हर चीज़ करती है जो poet करता है. And sometimes it grows big, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है. And sometimes it goes so small that nobody can see it. वो कभी कभी इतनी छोटी जाती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता है. And in this poem he shows that the shadow is like poet's twin. वो poet की twin जैसी exact same copy है. So here we completed our poem. Thank you.